Please come. Good afternoon. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. Nice to see you. Thank you. Would you please remove your... Great. Yes, sir. So pleasant. Thank you. You seems to be a PO by Thank you, appearance. Please tell me, what is bank? What is bank? Sir, banks are those financial institutions which take deposits from the public and other companies and use it to provide loans to other required who are required. Needy person. Yes, needy person, and then generate interest from there, which is the profit of it. Okay. And how bank pay back you the depositor? Sir, depositor, sir, the profit generated from the Depositors. Yes, So, sir. in which manner? Sir, in form of sir interest. What is difference between saving bank and current account? Sir, in current account there is sir no interest which is to be given to the customer. Well, in current account interest is payable or not? No, sir, not payable. While in savings bank the interest will be to the customer. Is there any restriction on transaction in current account and saving account? Sir, in current account there is no restriction in transaction, but in savings account there are certain restrictions depending upon the banks. Very good, very good. So suppose you are going to open an account in the bank. Yes. So what papers banks are demanding these days? So these days, sir, they will demand first proof of name and sir address. Your ID Yes, and sir. address proof. Yes, sir. And For if- that, what sort of paper they are requiring? Sir, they require mostly Aadhaar card. Aadhaar card. Yes, sir. Aadhaar card is the preference. Those paper should be issued by government authority. Yes, sir. Okay. And thereafter, is in addition to ID proof and address proof, And so if I does have some income, then they will ask for income certificate and is it so? PAN card. So, PAN card, they may Yes, sir. require PAN card. Yes, sir. You suppose you do not deposit your PAN card. Yes, sir. If they open your account Yes, sir. and you have substantial deposit in your account Yes, sir. and you have not paid any, not deposited your PAN card, Yes, sir. it means they will be deducting interest, income tax on your interest earning at the rate of 20%. Bank used to deduct interest on the interest earning. No, sir. Yes, it is 10%. 10%. 10%, and if you have not deposited PAN card, then it is 20%. So normally people used to submit PAN card and Aadhaar card, Yes, sir. so that the accrued interest cannot be taxed Yes, at sir. 20%. Yes, sir. So why bank are interested to ask you for Aadhaar card Sir, Aadhaar card is or any ID card? Why? sir, any of the government IDs are generated by the central government or state government. So they have trust on the government that is verified. So what is the requirement of bank to know about yourself? What is that? What is the name of that requirement? Sir, if we are taking some loans or some credit from the bank, then the bank should know about us that whether if I am not able to pay that interest, so they could come to. But suppose you come to open a deposit account, Yes, then also bank asks you to give Aadhaar Aadhaar card, card. Yes. PAN card. Why? What compel them to take all these paper from you? Sir, so as to know and So customer. know the Know customer. your customer, What KYC. is that? Yes, sir. That Yes. is what is that? KYC. KYC, simply. KYC. Yes, sir. KYC. Have you idea what you know?
YONO. Yes. What is the full form of YONO? So you only need one. You will not need one. You know, can you withdraw cash through you know? Yes, sir. How? Sir, in YONO, sir, after logging into YONO, sir, there is a option of YONO Cash. YONO cash. Yes, sir. And then when we open that option, then we'll get ATM withdrawal or sending to some POS. Okay. So after putting into, sir, opening ATM withdrawal, we will enter the amount, and then we'll enter some PIN which we will need to put in. YONO PIN. Yes, sir. And then we can withdraw from the Then you ATM. will get some message. 6-digit Unique code in code. message. Yes, sir. Okay. Through which we can withdraw. Very good. So you can have cashless transaction at ATM, cardless transaction at At ATM. ATM. Yes, sir. Very good. So again, coming to opening of account, there is a KYC norm. Yes, sir. KYC norm is required because of which act? Is it related to any act of money laundering type? Sorry, sir. Why they are requiring KYC? Not knowing. Okay, no problem. And KYC, do you know what are the several stipulation of KYC? No, sir. Sorry, sir. That is, customers are classified into different risk, low risk, medium risk, high risk. So might be, sir, depending on their income. Depending upon their only income. And sir, the interest, the time of interest they are paying, depending on time of. No, it is not so. But customers are three types for that is low risk, medium risk, and high risk. Yes, sir. Low risk, who is well known to bank, Yes. that customer is. Low risk. Yes. It is not so well known. It is medium risk. There may be some garbage. Yes. And they are which are altogether a stranger, but depositing all PAN card and this card, and also because they are altogether a stranger coming from this other part of country, they are high risk people. Yes. So because you are son of banker, this person is bound to come. Yes. And KYC is guided by, prompted by money laundering. What is money laundering? Sir, money laundering means, sir, the black money which is converted into white money through some organizations and NGOs. So why it is called laundering, money laundering? Sir, because it is, sir, the black money which is not listed in the government accounts, and then it is converted into, sir, white money which is usable. And in laundry we used to Clean. wash our Yes. dirty cloth. Yes. So in money laundering, washing the black money into White money. white money. So it is name is money laundering. Yes. There is act in this regard, 2002. Okay. And I think in a state bank, some of the bank has been merged recent years. Yes, sir. Which were those banks? Sir, State Bank of Bikaner and Jaipur, and, sir, All their associate banks. associate banks, and How sir, many were Bharatiya associate Mahila banks? Bank. Bharatiya Mahila Bank. Yes. 5 associate bank And one Bharatiya Mahila Bank. Very good. So now which is the largest public sector bank? Sir, largest public sector bank is State Bank of India. How many public sector bank are there? Sir, 12 public sector banks. And how many nationalized bank? Sir, nationalized banks, 13. And Never say something. All the public sector bank, are nationalized. all the nationalized bank are public sector bank. So nationalized bank cannot be more than Yes. public sector bank. Yes. It is 11. Sir. क्यों जाना चाहते हैं बैंक में? सर, फादर बैंक में है, एंड सर बैकग्राउंड मिला हुआ बैंक का, लेकिन फिर सर एक मीन्स टेक्निकल डिग्री के लिए जाना चाहे थे, तो इसलिए फिर इंजीनियरिंग की, और उसके बाद सर फिर बैंकिंग। जो इंजीनियरिंग आपने किया, इस इंजीनियरिंग के नॉलेज का बैंक में क्या उपयोग होगा आपका? सर, एज मीन्स डायरेक्ट यूज तो नहीं है, एजुकेशनल जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है,
तो उससे सर मीन्स इनडायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं अदर देन मीन्स डीलिंग विद कस्टमर लाइक नोट प्रिंटिंग और अदर फील्ड में हम यूज कर सकते हैं इस नॉलेज का बट सर आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग सर माई एनालिटिकल स्किल्स गॉट इम्प्रूव एंड दैट व्हाट आई कैन यूज इन कस्टमर डीलिंग डायरेक्टली। आपके फादर बैंक में हैं, यस आप उनको देखते होंगे। यस एक बात बताइए जो आपको बहुत पसंद आता है उनके जीवन का, उनके प्रोफेशनल लाइफ का, और एक जो आपको एकदम पसंद नहीं आता है। सर उनके प्रोफेशनल लाइफ का एक बात ये पसंद आता है कि जो रिस्पेक्ट उनको मिलता है कस्टमर से, जो भी नोन पर्सन है उनसे जो रिस्पेक्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। और दूसरा सर कभी कभी बैंक में मीन्स उनको टाइम नहीं मिल पाता है फैमिली के साथ बिताने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं इस चीज़ में। लाइक जब सर क्लोजिंग टाइम होता है बैंक का मार्च में, तो उस टाइम काफ़ी बिजी हो जाता है और कभी कभी बीच में कुछ ज़्यादा वर्क आ जाता है, वो सर थोड़ा सा। अगर आप बैंक नहीं ज्वाइन करते तो क्या करते? सर ऐसा तो सर सोचे काफ़ी पहले से बैंक ज्वाइन करने का मतलब ये इच्छा था और फादर जब बैंक में थे तो मीन्स उनको देख करके एक मतलब प्रोत्साहन मिलते रहता था ये सेक्टर अच्छा है, इसलिए सर दूसरा अभी सोचे नहीं थे कि कहाँ हो जाते। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। अच्छा सीबीएस के बारे में जानते हैं क्या? सीबीएस क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम। सीबीएस। ठीक है सॉरी। अच्छा चेक कितने प्रकार के होते हैं? सर चेक के बारे में सर सॉरी सर भूल रहे हैं। क्रॉस चेक, मिरर चेक, क्रॉस चेक के बारे में इसके बारे में जान लीजिएगा। कितने टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स। यस। ठीक है। फंक्शन ऑफ बैंक के बारे में कुछ जानते हैं? सर फंक्शन ऑफ बैंक सर लेंडिंग मनी एंड सर प्रोवाइडिंग लोन्स एंड। ठीक है। एसबीआई के बारे में कुछ बताइए। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। आपके फादर बैंक में? यस सर। आइडिया है। झारखंड से आए आप? सर झारखंड में सर अभी रह रहे हैं, यहाँ पोस्टेड थे फादर। घर कहाँ? घर सर महारत हुआ नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बिहार में है। यस। महारत या महारत? महारत सर। महारत में फेमस है सर वहाँ सर मोस्टली जो फार्मिंग के लिए वो जाना जाता है। अच्छा किस प्रकार का? वीट की फार्मिंग सबसे ज़्यादा सर होती है, वीट एंड शुगर की। वीट एंड शुगर। यस सर। अच्छा ये जो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कहाँ कहाँ? सर नोट प्रिंटिंग प्रेस। नोट प्रिंटिंग प्रेस। सर नोट प्रिंटिंग प्रेस सर सालाबोनी, नासिक एंड सर देवास एंड सबसे बड़ा कॉइन जो वैल्यू का कॉइन्स कितने का है? सबसे अधिक मैक्सिमम वैल्यू का कॉइन्स कितना तक प्रिंट हो चुका है? अभी तक प्रिंट हो चुका है जो सर आई थिंक सर कॉइन 20 कोई बात नहीं। 100 और 200 तो पहले सर आपने कितना कॉइन देखा अभी तक? सर अभी तक जो हम सब देखे हैं उसमें सर 20 रुपीज़ का कॉइन हम देखे हैं। और आप 200 तक अब कितना का बोला? 200 तक कॉइन निकल चुका है। नहीं सर एक वन से कहीं पढ़े थे हम। हाँ, सर 1976 के अराउंड में कॉइन इससे ज़्यादा वैल्यू का पब्लिश हुआ जो कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अच्छा नहीं अभी जो मैक्सिमम प्रिंटेड है अभी सब देख लीजिएगा नॉलेज। अभी 20 रुपीज़ का तो सर हाँ नॉलेज गेन कर लीजिएगा कितना देख रहा है। अच्छा ये बताइए 100 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? सर गवर्नर ऑफ RBI। अच्छा 20 रुपये को गवर्नर सारे पर गवर्नर ऑफ RBI? नो सर 1 रुपये के नोट पे सर 1 रुपये का नोट अभी आ रहा है? सर मीन्स है ज़्यादा अभी ट्रेंड में नहीं है मार्केट में, लेकिन अवेलेबल रहता है। पुराना कि नया? सर नया मीन्स एकदम नया तो नहीं, लेकिन सर कभी कभी वो छपता है तो सर अवेलेबल हो अभी छप रहा है। ठीक है ओके। ये सब जो क्वेश्चन दिए हैं सब जाके नॉलेज करना पड़ा है। नोट में कितना लैंग्वेज रहता है? कितने लैंग्वेज रहते हैं नोट्स में? 7 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश एंड हिंदी। 15 प्लस इंग्लिश हिंदी। 15 प्लस इंग्लिश। ठीक है यस। बाकी सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा सिलेक्शन। इंग्लिश छोटी छोटी बातों तुम मिस कर रहे हो। 3-4 चीज देख लेना, नेट पर निकालते जाना। रुपया देख लेना, सिक्का को देख लेना क्या है उसके अंदर।
Yes, ठीक है, रुपया पर क्या लिखा है, क्या कितना लैंग्वेज में क्या है, देख लेना अच्छा से। वाटर मार्क छोटी छोटी बातों को आप भूल रहे हो। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर में क्या क्या होता है, Yes. आगे पीछे किधर क्या होता है, देख लेना। ठीक है? सर ये सब- वो सुबह में ही देख सब देख लेना, वैसे ठीक है, तरह हो जाएगा। और ये जजमेंट देख लेना, लालू यादव का जजमेंट जो आया वो देख लेना, फंसना नहीं होता बस। सर इंजीनियरिंग में ये नहीं चर्चा करना कि नोट प्रिंटिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक या कोई भी बैंक नोट प्रिंटिंग नहीं करता। आरबीआई में नौकरी करते तब इसका यूज होता, इसकी चर्चा मत करना। जो बताया हो नहीं को एनालिटिकल नॉलेज हमारा बढ़ जाता है, ये हो जाता है, उसको हाईलाइट करना यस सर। है ना। नोट प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी तुमको पता है, इसकी मतलब नहीं, इसकी चर्चा कमर्शियल बैंक में नहीं कर सकते। यस सर। एनालिटिकल स्किल बोर्ड्स मुझको एबिलिटी टू एनालाइज है या बाकी जो चीजें वर्किंग इन प्रेशर वो कंडीशन, सब बोलो, डेडलाइंस, पर्सनल क्वालिटीज जो इनहांस डिसिप्लिन, लॉजिकल वर्किंग, ये सब ठीक है हो जाएगा। हो जाएगा तुम्हारा एकदम फाइनल हो जाएगा। जाओ रिजल्ट पहले लेके आओ। समझ रहा है कि जो बैंक का एम्प्लॉय बैंक हम लोग देख चुके हैं ना, तुम्हारा क्या क्वालिटी है, हो चुका है तुम्हारा। बैंक का एक ऑप्शन इन किया था, ठीक है ना। हाँ। नहीं तो बैंकर का लड़का बैंक में आया है, इसका मतलब सब Welcome एक समझ करता है, के वो welcome ठोक बजा करता के है। आ रहा हो, रुकेगा भी तुम। एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन रहेगा तुमके ज्वाइन के, तो बताना इसमें पापा रसूल से ये- तो जो बताया था। यस 60% तुम्हारा इसका तो वेटेज अरे इसी में दर्द दिया होता है है बाबू अदर बैंक कि में। मेरा लड़का बैंक में नहीं आया, हम बेकार नौकरी किए। इट्स ऑलराइट। आपको भी कुछ पूछना है? सर अभी नहीं, पहले एक बार देख लेते फिर। ठीक है, कब जाना है आपको? सर आज रात में निकलना। आप किसी भी समय कोई भी डाउट हो, नंबर किसी का नहीं लोग भी का भी हो तो वहाँ से नोट नंबर कर मांग लो, लीजिएगा। फोन करके भी पूछ सकते हाँ, हैं। वो रिसेप्शन पर जिसका चाहिए नंबर मांग लीजिएगा, वो मिल जाएगा तुरंत और आप पूछ लीजिएगा। परसों नहीं इंटरव्यू है, यस कल कुछ पढ़ोगे, कहीं कंफ्यूजन हो जितना बताया उसको अच्छा से नोट डाउन आज और करके कल रात तक। हाँ, आराम से, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो जो पूछे उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ऑल द बेस्ट। 60% तो तुमको इन करोगे, मान लेगा कि हो गया बैंक अफसर आ गया, इतना कॉन्फिडेंस लेकर जाओ। ठीक है। 60% तुम्हारा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है, यस बाकी 40% ठीक है जा। ऑल द बेस्ट। नौकरी कर भैया। ग्रुप में हो ना तुम, क्या इंटरव्यू पूछा गया उसको भेज देना लिख के, यस सर। या वैसे भी लिख के पेज में नहीं तो लिख के भेज देना क्या क्या पूछा गया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नहीं बाबा यहाँ है तुम्हारे लिए। बाय बाय। नेक्स्ट को भेज देना, कौन है?